मेरी आवाज आ रही है ना? जी, ओके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी व्याख्यान माला का एक उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद में बहुत ही समर्थ और अच्छे चिकित्सक निर्माण हो, जिनके माध्यम से हम भारत के लोगों के बीच में और विश्व के बीच में आयुर्वेद का एक सबल पक्ष लेकर उनके सामने उपस्थित हो सके। ऐसे ही एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखकर आज हम इस व्याख्यान की शुरुआत करेंगे कि कई बार हम मूलभूत चीजों को नहीं देख पाते हैं कि जहां हमें जिन बातों पे गौरव करना चाहिए और जिन बातों की सोच में सबसे पहले वो चीज आनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आपके सामने ये विषय रखती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ने किसी साधु महात्मा के पास ये सुना कि देखिए भगवान कितना करुणामय है, भगवान कितना उपकार करता है हमारे ऊपर। वो भूखे उठाता तो है मगर भूखा कभी सुलाता नहीं है। सोने से पहले भगवान कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति के लिए देता है। तो एक व्यक्ति ने ये बात सुनी और वो सुनने के बाद उसको लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, साधु महात्मा तो बिल्कुल सिद्ध है, वो तो कभी गलत बात बोलते ही नहीं है। तो ठीक है, भगवान तो खाना बिल्कुल खिला देगा, सबको खिलाता है तो मुझे भी खिला देगा। तो उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कहीं अपना स्थानक जमाया और वहां बैठना शुरू कर दिए। कभी कोई व्यक्ति कुछ देता था, अर्पण करता था, कभी नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलने की परंपरा ज्यादा रही, तो जिसके माध्यम से उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसको बहुत गुस्सा आया। कुछ समय पश्चात उसकी हालत क्षीण और दुर्बल हो गई, रस धातु क्षय हो गया, ऐसा कह सकते हैं हम आयुर्वेद की भाषा में। तो वही महात्मा उनको फिर से मिले और उन्होंने काफी गुस्से से और परेशान होकर उनको कहा कि नहीं, आप तो ये कह रहे थे, आप तो जीत हस्त है और आप तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, तो आपने ऐसा कैसे कहा था? मेरी हालत तो बिल्कुल, आपके भगवान ने मुझे बहुत बार भूखा सुलाया। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा पहला पूरा लेक्चर सुना था? उन्होंने कहा नहीं, ये लास्ट वाला जो सारांश था वही सुना था मैंने। तो फिर महात्मा ने सुनाया कि मैं एक जंगल से निकल रहा था, उस जंगल में मैंने एक शेर को एक शिकार करते हुए देखा और उसने उस शिकार में से कुछ अवशिष्ट छोड़ दिया था, शेष छोड़ दिया था, जिसके माध्यम से बहुत सारे चील, कौवे, सियार और बहुत सारे पशु पक्षियों का भी पेट भर गया। तो ये एक बात है कि तुमने शेर बनना क्यों नहीं सोचा? तुमने चील, कौवे, गीद, सियार और नीचे वाली भूमिका पसंद की, है ना? तो जिंदगी में बहुत बार हमारे पास भी ऐसा ही समय आता है कि जहां हम सोचते हैं कि भगवान या अन्य लोग या समाज या वो लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। और आयुर्वेद के लिए भी मैं कई बार सोचती हूँ कि ऐसा ही हो जाता है कि भाई हमें फंड मिलेंगे फिर हम चिकित्सा कर पाएंगे, हमें कुछ सुविधा मिलेगी तब हम ये कर पाएंगे। मगर मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम जहां कहीं भी है, जैसे भी है, अगर हमारी शेर बनने की विचारधारा है तो हमें आयुर्वेद की सेवा करने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी उसमें विक्षेप, मुश्किल नहीं आ सकती, है ना? तो मैं चाहूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स शेर बनने के लिए सोचे, नहीं कि शेर के शिकार पर पलने वाले अन्य प्राणियों के ऊपर सोचे। और यही बात एक बहुत अच्छे महान व्यक्ति ने कही है कि हमें जीवन में ये सोचना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया, नहीं कि ये सोचना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया। तो ऐसे ही देश की जगह हम आयुर्वेद शब्द रख सकते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने आयुर्वेद ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आयुर्वेद को क्या दे रहे हैं, हमारी सेवा आयुर्वेद के लिए क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आयुर्वेद होनी चाहिए और हम सब मिलके जब एक साथ में सक्षम होकर करेंगे तो हमारे सारे स्टूडेंट्स लायक बन के निकलेंगे और वो दूसरे से नौकरी मांगेंगे नहीं मगर नौकरी देने वाले बनेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं इसी परंपरा का आगे निर्वाह करते हुए आज के प्रथम व्याख्यान के लिए डॉक्टर अनुभा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अनुभा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से द्रव्य गुण विभाग से
एमडी किया है और पीएचडी भी उन्होंने यहीं से की है। अभी वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और आगे भी आपने हमें बहुत सारे रसोई में काम आने वाले द्रव्य के बारे में, छोटे छोटे उनके उपयोग, प्रयोग करने की विधि भी बताई, उसके एडल्ट्रेशन और वो सही तरीके से उपयोग में आए उसकी भी सारी विधि बताई। उसके लिए हम विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि इन्हीं सभी के माध्यम से बहुत सारे अच्छे चिकित्सक निर्माण हो पाएंगे और इस ज्ञान यज्ञ में इस आहुति को हम अतुलनीय मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अनुभा, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. Namaste, ma'am. And good afternoon to all the fellow learners of Ayurveda over here. आज का जो हमारा द्रव्य है, जो मेन स्पाइसेस है हमारे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो जिस द्रव्य को हमने लिया है वो है टैमरिंड, इमली। हालांकि इमली जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में एज ए स्पाइस बहुत कम यूज होता है, बट इन द क्यूजीन ऑफ साउथ इंडिया और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे टैमरिंड जो है वो रेगुलरली किचन इंग्रेडिएंट है या कुकिंग इंग्रेडिएंट है। तो आज उसी को लेके आज का हमारा थोड़ा सा ये रहेगा। तो अम्लिका के बारे में अगर बात करें तो सबको पता है जनरली हम स्पाइस में एज अ फ्रूट पल्प यूज करते हैं, और अगर हम मेडिसिनली देखें तो फ्रूट पल्प के साथ साथ हम उसकी बार्क और सीड तीनों चीजों का यूज करते हैं। ये द्रव्य मैंने आज स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि अम्लिका को हम जनरली मेडिसिनली बहुत कम यूज करते हैं, एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जो हमारे शास्त्रोक्त उसके कर्म बताए गए हैं वो सारे प्रूव हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अम्लिका के लिए बताया गया है कि ये जो है सर्प विष नाशक है, या फिर अगर हम कहें कि जनरली भी विष नाशक है। ऐसा ग्रंथ माधव में आया है कि ये सर्प विष का नाशक है, एंड टू द सरप्राइज जो इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं उसमें इसकी एंटी वेनम एक्टिविटी टू द अभी तक जितने भी जनरली जो अभी चल रहा है उसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में खाली, लेकिन टेमेरिंड की लीफ का की एंटी वेनम एक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू दैट पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये प्रूव हो चुका है, एंड फर्दर जो डेवलपमेंट चल रहा है वो इसी के ऊपर चल रहा है, इसी को एज ए एंटी वेनम ड्रग डेवलप करने के लिए। दूसरा हमारा जो अम्ल रस का भी द्रव्य है, और अम्लिका को वैसे भी जहाँ पे भी अरुचि है, अग्निमांद्य है, वहां पे बताया गया है। तो इसकी जो प्रोटीज एंजाइम्स हैं उसके ऊपर इसकी जो एक्टिविटी है वो प्रूव हो चुकी है। इट एनहांसेस द वर्क ऑफ, इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव जूस। तो जो हमारे यहाँ पे इसका कर्म एनोरेक्सिया में बताया गया है या अग्निमांद्य में बताया गया है, डेट इज ऑल्सो प्रूवन। उसके बाद हमारे यहाँ पे इसको अतिसार में बताया गया है, तो इसकी अतिसार में और अर्श में इसका विशेष प्रयोग बताया गया है। तो इसकी एंटी डायरियल और एंटी डिसेंट्री एक्टिविटी जो है वो भी प्रूव हो चुकी है। ये जो मॉडर्न मेडिसिन है वो अभी मैं रिसेंट स्टडी पढ़ रही थी, नाउ WHO ने भी ये रिकमेंड किया है कि इसी को लेके फर्दर जो आगे एंटी डायरियल और एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स हैं वो इसी को बेस लेके डेवलप की जाए, क्योंकि जो अभी तक उनके पास हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए अभी WHO की भी रिकमेंडेशन है कि अम्लिका को लेकर ही एंटी डायरियल ड्रग्स जो है वो आगे डेवलप की जाए। दूसरा हमारे यहाँ पे इसको अक्षी रोगों में बताया गया है कि मतलब अगर हम देखें शुष्क अक्षिपाक या फिर ड्राई आई सिंड्रोम जो है आज का, उसमें इसको बताया गया है। और ऑप्थेल्मोलॉजिकल अगर हम इसकी एक्टिविटी देखें तो इसकी जो सीड है, बीज का हमें वहां पे यूज करना है एज अ आई ड्रॉप, इसको यूज किया गया है। और ये ड्राई आई सिंड्रोम, ऑक्यूलर बर्निंग, और जिनको हमारे यहाँ पे जो ब्लिंकिंग डिसऑर्डर है जैसे कि निमेश है, उसमें इसको बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट मिला है।
और अगर आप सबको इंटरेस्ट हो तो मैं इन सारे के जो रेफरेंसेस हैं वो भी मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, तो वहां से आप इसको देख भी सकते हैं, इन सारी रिसर्चेस को पढ़ सकते हैं। दूसरा एक जो हमारे यहाँ पे सिद्धांत आता है अम्लो हृदय नाम, कि वो दो तरीके से आता है, कि एक तो जो मन के लिए प्रिय हो और जो हृदय के लिए हितकारी हो, दोनों ही रेफरेंसेस में यूज होता है। तो अगर हम अम्लिका की बात करें जो कि अम्ल रस का द्रव्य है, तो इसकी जो रिसर्चेस हुई हैं, अम्लिका जो है वो लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है। दूसरा जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी इसके अंदर है। और एक चीज और है कि ये एचडीएल पे इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है जितना ज्यादा इसका एलडीएल को कम करने में हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट जो एलडीएल के ऊपर इसका ज्यादा है और ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर ज्यादा है। तो जो हमारे यहाँ है अम्ल हृदय नाम। दूसरा एक अम्ल रस का आता है कि अम्ल रस का अति सेवन, वैसे अति सेवन तो 6 के 6 रसों का वर्जित है, लेकिन अम्ल रस के अति सेवन से धातु नाश का जो वर्णन है। तो अगर वो अगर अम्लिका में को लेकर ही स्टडी हुई है कि अम्लिका का अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो सेल का जो नेचुरल साइकिल है, जो नेचुरल उसका एपोप्टोसिस का जो टाइम है वो डिक्रीज होता है। तो जो हमारे यहाँ पे अम्ल रस का अति सेवन जो है धातुनाशक के रूप में बताया गया है, डेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, अगर हम इस रेफरेंस में देखें तो वो प्रूव होता है। बाकी अम्लिका में एडल्ट्रेशन सच हमें मार्केट में कोई नहीं मिलता है, द्रव्य के रूप में एडल्ट्रेशन नहीं मिलता है। कितने क्या एडल्ट्रेशन मिलता है कि उसके अंदर हमें ये जो मिट्टी वगैरह है वो सारी मिली हुई मिलती है, बाकी सच द्रव्य जो है वो मार्केट में एडल्ट्रेटेड जनरली अम्लिका नहीं मिलता है। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और इसके बारे में ऑलमोस्ट जितने भी शास्त्रोक्त कर्म है वो सारे प्रूव्ड हैं आज के टाइम में। अगर मुझे कभी मौका मिला तो एक पूरी 1 घंटे से क्या 2 घंटे की पूरी प्रेजेंटेशन विद एविडेंस इसके ऊपर हो सकती है। एंड दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट अम्लिका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुभा, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। और मैं समझती हूँ कि इमली बहुत ही बढ़िया द्रव्य है, और हम जब खाने में और अन्य सारी चीजों में भी जब उपयोग करते हैं तो आपने बिल्कुल सही बताया कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से हमारा दीपन पाचन से लेके सारे गुणों को बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है। आपका हार्दिक धन्यवाद। आज के लेक्चर्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मेन लेक्चर्स है आज का हमारे द्वितीय वक्ता है डॉक्टर अनुराधा। आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा BPS MV खानपुर कला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा में। वर्तमान समय में आप शाला के विभाग में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा से की हुई है, कुरुक्षेत्र से की हुई है। और आपने अपनी MS चालक्य तंत्र की पढ़ाई राजीव गांधी गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला हिमाचल प्रदेश से आपने पूरा किया है। आपके 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नेत्र रोगों के ऊपर है। और आप मेरी स्टूडेंट भी रही है, और तभी से मैंने देखा था कि बहुत ही ज्यादा मेहनती बच्चा, जिसको देख के ऐसे दिल बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स आप रहे, और मैं हमेशा जब अन्य बच्चा भी कभी मेहनत करता है या कभी नहीं करता है तो भी याद आ जाती है एक लैंडमार्क की तरह कि यू आर दी बेस्ट प्रतिभावान स्टूडेंट। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर की बहुत बड़ी कमजोरी होती है एक अच्छा बच्चा, अच्छा स्टूडेंट्स की, जो ऐसा लगे कि मेरे बाद भी बहुत अच्छा कर लेंगे, संभाल लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत वेलकम बेटे विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर कि आज इस ज्ञान यज्ञ में हम आपको आहुति देने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैम। नमस्कार। और बाकी सभी जो भी लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबका भी मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो सबसे पहले गुरुओं को वंदना, और अब हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो मेरा टॉपिक जो है आज का मैं प्रेजेंट करती हूँ। हाँ जी बेटा। हाँ जी, स्लाइड इज विजिबल मैम? हाँ जी बेटा, दिख रही है। फुल व्यू में है मैम अभी? जी बेटा, जी बेटा, फुल व्यू में है जी। ओके, सो माय टॉपिक इज ड्राई आई सिंड्रोम। कोई भी डिजीज पढ़ने से पहले मैंने जो ये टॉपिक आज बनाया है, ये नॉर्मल बहुत ही बेसिक और यूजी स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, या फिर बहुत ही मूलभूत सिर्फ ये बताने के लिए कि ड्राई आई क्या होता है, मॉडर्न मेडिसिन में उसके लिए किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और हम आयुर्वेद से इसमें क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पहले क्या था, ड्राई आई डिजीज काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जो कोविड ने किया है, क्योंकि आज के डेट में हम सबका बहुत सारा समय जो है वो स्क्रीन के सामने गुजरता है, तो स्क्रीन के सामने होने से जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लेंट जो लोगों को आ रही है वो ड्राइनेस की। तो इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को चुना है। तो आइए शुरुआत करते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। So dry eye disease or dry eye syndrome, it is defined as a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential damage to ocular surface. ऑक्यूलर सरफेस अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो जो कॉर्निया की बाहर की जो परत है, या कंजक्टाइवा जो है, या लिड्स के अंदर का जो भाग है जो कि ग्लोब के ऊपर ग्लाइड करता है, तो वो है ऑक्यूलर सरफेस। और इस डिजीज में क्या होता है, इट इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ टीयर फिल्म। टीयर फिल्म जो है कि आंसू की जो परत होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड साथ में हो जाता है सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑक्यूलर सरफेस। Current scenario: prevalence of this disease is greatly influenced by geographic location, climatic conditions, and lifestyle of people. इनिशियली जब, जैसे मैंने अभी बताया कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल यूजेज जो कोविड से पहले है वो कम था, जो लोग सिर्फ अपना टीवी देखना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, या लैपटॉप पे कुछ भी नॉर्मल काम करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा से करते थे। लेकिन आफ्टर कोविड द होल सिनेरियो हैज चेंज्ड। तो अब वर्क फ्रॉम होम का जो है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि अब हम कर ही रहे हैं, अदरवाइज मैम के जो ये लेक्चर्स हैं ये सब ऑफलाइन होते थे, तो अभी ये जैसे ऑनलाइन हो रहा है, तो ये ही इस चीज को इंगित करता है कि आज की डेट में कितनी ज्यादा यूजेज है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल यूनिट्स की और ऑनलाइन चीजों की, जिसकी वजह से ड्राई आई बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिफोर कोविड इट्स प्रिविलेंस वाज 32%, which was much higher than the world wide prevalence, और आफ्टर कोविड का तो अभी सिनेरियो जो है वो आया ही नहीं है। It occurs when there is inadequate tear production or inadequate function of tears. अगर किसी भी चीज की कमी होती है तो हम उसको दो तरीके से ले सकते हैं, या तो उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन की मात्रा तो ठीक है लेकिन जो उसका कंपोजिशन है या जो वो फंक्शन कर रहा था वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन अनस्टेबल टीयर फिल्म एंड इवेंचुअली ऑक्यूलर सरफेस disorder. This dry eye disease, it can be categorized into two forms. First one is, as I earlier told, tear deficiency, which is termed as aqueous deficient dry eye, or second one is where there is hyper evaporation, means evaporation of tears gets increased. So these are the two types, and mixed forms in which both the things are found that are common. Now let us talk about what is tear film. In this picture, you can see there are three layers. The upper one indicated by dark blue color, it is lipid layer, and the middle part, which is very
skin-like or brownish color, which is the most 90% of part, that is aqueous layer. And the lower one in the picture, which is shown by the microvilli, is the mucus layer. So in this picture, it is shown that the mucus layer, it is formed by goblet cells of conjunctiva, and the upper one, lipid layer, it is formed by meibomian glands, which are tarsal glands, which are found in eyelids. And the main major portion of the tear film, which is aqueous layer, that is formed by the lacrimal gland. So what is mucus layer? It converts, why the significance of mucus layer, why the mucus layer is needed in tear film? Because the tear film covers cornea and conjunctiva. The outer layer of cornea, which is epithelium, that is hydrophobic. And that hydrophobic surface, hydrophobic means that is repellent to water, so that does not want to hold water. So what this mucus layer does, this allows the wetting of an ocular surface by converting the hydrophobic surface into hydrophilic one. So there is epithelium, then mucus layer, and mucus ke upar the major portion aqueous layer that gets held. So next one is the aqueous layer, which is secreted by the lacrimal gland and which consists of major portion of the tear film. The lipid layer, which is the outermost layer, means it is present towards the atmospheric side of the eye. And mucus layer, as I told, कि वो epithelium के ऊपर है, cornea के ऊपर है, so that means वो innermost hai, and the lipid layer is outermost. And this is produced by meibomian glands, which are present in the eyelids. And what it does, the lipids, they prevents the overflow of tears, means the tear film layer is present throughout the day over our eye. It does not roll down. The tears, they don't roll down automatically, so it is held by the lipid layer. They just roll down when there is excessive watering or when we cry. So this lipid layer is the reason for not overflowing of the tears, and it retards the evaporation of tear film. So now the question is, why there is tear film? What is the need of tear film? So tear film cleanses or washes away all the debris. It can be any dust or any foreign particle. So it washes away all the obnoxious irritants. It wets the ocular surface, because wetting of ocular surface is very much needed for proper functioning of epithelial cells of cornea and conjunctiva. And it prevents the infection. It makes the first line of defense, because it has antibacterial substances, lysozyme, lactoferrin in it, which makes a first line of defense. And next thing is, it provides oxygen to the corneal epithelium. Cornea is an avascular structure, means it does not have any direct blood vessels to supply it. So the corneal epithelium, it gets its oxygen from the from the atmosphere, which is dissolved in the tears. And it facilitates the movement of lids over the globe. We blink, our lids are just gliding on the globe. If there is no tear film, then there will be friction and it will be very difficult to open and close the eyes. So for this purpose also, there is tear film. Next, secretion of tears. Tears are continuously secreted throughout the day by the basal and reflex secretion. Basal secretion is accessory secretion and it is secreted throughout, and main secretion is reflex. Reflex secretion is in response to sensations from cornea and conjunctiva, probably due to evaporation. By evaporation the tear film gets broken, then it sends a message to again secrete the tears. From the lacrimal gland, tears, they flow downwards and laterally across the ocular surface. A variable amount of tears, they are lost by evaporation, and the remaining part of tears, it gets drained by the lacrimal passages into nasal cavity, which is seen in the next pic. In this pic, it is shown
Towards the outer canthus, there is lacrimal gland in the lacrimal fossa. It has small ducts, numerous ducts, which um, by which the tears are spread into the conjunctival sac of the eye. The tears, they get accumulated into the eye, and from there is a structure called lacrimal puncta. From puncta, they get drained into canaliculus. There are two canaliculi. They can they open into lacrimal sac. They can open individually also, or they can form a common canaliculus to open into lacrimal sac. And from the sac, the tears are drained into nasolacrimal duct, and from nasolacrimal duct, the tears are sent to nasopharynx and throat. So this is the normal passage of drainage. This happens throughout the day involuntarily. We even don't know that this process is happening. This is the normal procedure. What are the factors which affect the spread of tear film? Normal lacrimal neural arc means normal formation of lacrimal tears and spreading. If tears will not be formed, then there is no point of spreading of tear film. And next thing is contact between ocular surface and eyelids, because if the eyelids are not juxtaposing the ocular surface properly, then we will not blink our eyes properly. And if we will not blink, then the spread of the tear film will not happen smoothly. And for the tear film to spread, there must be the smooth surface of cornea, smooth surface of conjunctiva, smooth surface of limbus, which is junction of sclera and cornea, and smooth surface of eyelids. So all the ocular surfaces must be smooth for proper spreading of tears. Now this is a picture for the neuronal arc which I was talking about. From the ocular surface, the stimulation is passed on to brain. When there is evaporation of tears, the stimulus is passed on to brain, and from brain, nerve impulses are sent to lacrimal gland, and from there, the secretion of tears occurs, and the ocular surface is again wet. So this is the normal loop. Now, what are the idiopathogenetic factors? There are three types of mainly the causative factors. First one is aqueous tear deficiency. Because there are three layers, so we in dry eye we may have problem in any of these. So first is aqueous tear deficiency. It is of two types: Sjogren disease and non-Sjogren. Sjogren disease means it is an autoimmune disorder in which the lacrimal glands and salivary glands are inflamed, and which results into, if the salivary glands are not producing enough saliva, then dry mouth will be there. And if lacrimal glands are not producing enough tears, then there will be xerosis or dry eyes. And in secondary Sjogren syndrome, there is dry eyes and dry mouth, along with another autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, SLE, or myasthenia gravis. RA is the most common one. Next is non-Sjogren diseases in which there is found aqueous deficiency. There may be any lacrimal gland deficiency or any obstruction in the lacrimal gland duct. Next layer was mucus layer, and when mucus layer is produced by goblet cells which are present into conjunctiva, when they are damaged, then there will be mucus deficiency, and it is caused by deficiency of vitamin A. As all of us know, vitamin A deficiency causes xerophthalmia and excessive conjunctival scarring, because if there will be many scars in conjunctiva, automatically the goblet cells must be damaged. Eventually it will not produce good mucin. And in lipid deficiency, it occurs in patients of chronic blepharitis and chronic meibomitis, because lipid part is formed by mainly meibomian glands, and if there is any inflammation in the meibomian gland, then there will be lipid deficiency.
So this is a bit elaborated. In vitamin A deficiency, what happens? Cirrhosis of conjunctiva, which results in goblet cell destruction. And when goblet cells are not formed properly or destroyed, then there will be a faulty production of mucin layer. In Steven-Johnson syndrome, there is also dry eyes. In this, there is mucopurulent membranous conjunctivitis, which again causes scarring of conjunctiva, and scarring of conjunctiva and lid margin will again form faulty tears. In OCP, it is also an autoimmune disorder in which there is blistering in skin and all the mucocutaneous part in the body. Eventually, mucous membrane is conjunctiva. So there will be scarring, or cicatrization means scarring. It will happen in the conjunctiva. And again, the same thing, mucus layer and aqueous layer will get deficient. CVS, computer vision syndrome. It is a vision relating problems which is done or which is caused by regular use of computer for long duration, 2 or more hours at a stretch in a day. What happens in computer vision syndrome? When we normally blink, normal blinking rate of eye is 16 to 22 times per minute. Means we blink our eyes in 1 minute normally 16 to 18 times. But when we do anything on any computer or when we watch a movie on a screen, we completely forget to blink our eyes, which eventually hampers the spreading of tear film. When we blink our eyes, we close our eyes and open it, then the drainage happens and then there is proper spread of tear films. But when we don't blink our eyes properly, then what happens? The tear films get evaporated also and it breaks down. So which causes dry eye. And in dry eye, patient will have blurred vision, and if there is subacute inflammation, then red eye will also occur. And asthenopia means fatigue symptoms will be there. In allergic conjunctivitis and VKC is vernal keratoconjunctivitis. In both these type of inflammation of conjunctiva, there is cicatrization and scarring means it will again cause mucin deficiency. And in some children where there is VKC means vernal keratoconjunctivitis, there is severe itching and burning sensation in this type of conjunctivitis, which causes which makes the patient to rub his or her eyes, and rubbing of eyes means rubbing of eyelids cause meibomian gland disease. And again, if the meibomian glands are not healthy, they will not form healthy lipid layer. Some medications are also found to cause dry eye, some diuretics and some antihistaminic, especially sedatives, anti-anxiety drugs. If they are taken for longer durations, then associated dry eye is seen in those patients. So now comes, what is the clinical feature? What are the complaints a patient comes to us and he or she tells us? So in patient's terminology, what he or she will tell, that he or she is facing dry eye, means feeling of dryness in the eyes, or grittiness means there is something foreign particle or something is there in the eye. That feeling is called grittiness, means some जैसे कुछ रड़क रहा है, that is grittiness. And burning sensation, when there is friction between the lids and the ocular surface, then eventually it will cause burning sensation to the eyes. Foreign body sensation, stringy mucus discharge, means the mucus which must have properly dissolved in the tear film, that gets kind of separated because that is not a healthy mucus. So that becomes an ropey or small strings type discharge. Transient blurring of vision due to this mucus discharge, which is stringy mucus discharge, which is adhered to the cornea. There can be blurred vision. And along with this, there may be subminimal inflammation in the conjunctiva, which will eventually cause redness in the eye.
patient may come to us and say that he or she is having difficulty in wearing contact lenses. Means earlier he or she used to wear contact lenses throughout the day and he or she was not facing any problem. But nowadays he or she is not does not want to wear contact lens because it is uncomfortable to the patient. So that may be an indicator that patient may have dry eyes. Crusting of lids, all this stringy mucus discharge, it get accumulated on the lids and crusting may be there. Narrowing of palpebral fissure. Palpebral fissure is the open area between the lids. So in the case of dry eye, patient is having problem in windy and out when he is out in the sun. So patient have a tendency to close their eyes and there will be narrowing of palpebral fissure in that case. Signs. Now, these are the symptoms which patient will tell us. What we will see in this disease and what we will find to confirm that yes, this is the dry eye syndrome. So first, we will see the tear film signs. As I told, if there is presence of stringy mucus, and if there is froth at outer canthus means towards the lateral side, towards the ear side, the junction of both the lids is canthus. If at that side froth, some jhag type ka discharge is found, which is typically seen in those workers or those labor class people who are doing work in hot and windy conditions and mostly or in old age. It is very commonly seen a frothy discharge in the outer canthus. So this is also a sign of dry eye. Or absent or reduced marginal tear strip. The tear strip, which is the tear meniscus, which is reduced or which may be absent in some cases. So what is tear film meniscus? It is the meniscus is the height which is found in the when the bulbar conjunctiva and the lid. Between the bulbar conjunctiva and the lid, there is a layer of tears, the height of which is measured by using OCT, optical coherence tomography. And in normal condition, it is 0.5 mm, plus minus 2 means 0.7 mm or even 1 mm in normal human beings. But in cases of dry eye, as the tear film is reduced, so this height gets reduced. And if it is found below 2 mm, that is regarded as pathological. As I already told, froth at outer canthus, that is also a foamy tear film, means there is foam. It is an indicator that the lipid layer is not formed properly and it is seen in meibomian gland dysfunction. Tear meniscus height is shown, which I was talking about between the bulbar and the lid margin. This red arrow, if you can see, the red arrow shows there is very minute 0.5 mm or 1 mm water line strip. This is tear meniscus. This is normally found in all the people, but in cases of dry eyes, it gets reduced. Now, tear film signs we have discussed. Now, conjunctiva, cornea, and some causative disease, their signs will also be seen. So, firstly, conjunctiva. In this figure, I have shown meibomian gland dysfunction. Meibomian glands are found in the lids, in the tarsal plate. They are found in both the lids, upper and as well as on the lower. So, these whitish pustules, which you may see, whitish dots, these are the orifices of the meibomian gland, means from where the secretion of gland will ooze out. But in this case, the gland is not healthy, so that's why the secretion is deposited over there and the orifice is blocked. So this is meibomian gland dysfunction shown in this pic. And in next pic, I've shown two pics. The upper one pic, in upper one, the bulbar conjunctiva is
Lusterless means there is no shine present in the bulbar conjunctiva. We have shine in our eyes due to the tear film. When tear film gets decreased, there may be some dryness even shown in the eyes from when we talk or when we see in the eyes, naked eyes, from the naked eyes. Even then, we can see that the eyes lack a luster or lack a sheen. And in the upper picture, the bulbar conjunctiva is having some rugae, means some folds, some wrinkling you may see in the upper picture, which is also due to dryness. In the lower picture, there is conjunctival xerosis due to vitamin A deficiency. In vitamin A deficiency, what happens? The epithelium of the conjunctiva, it gets distorted and it tends to become like skin. Means there happens keratinization of epithelial cells of conjunctiva. Means it tends to become harder and wrinkled. So that is conjunctival xerosis. Along with, in the lower picture, you can see the redness in the eye. So that is mild subclinical conjunctivitis. In this pic, major what I wanted to show is that the cornea, you may perceive it as very dull cornea. Otherwise, cornea is a transparent structure and it imparts the color of underlying iris, so which is seen as black in normal people towards in Caucasian it may be gray or green. In us, in this our subcontinent, it is generally brown or black. So in this picture, it is very dull looking cornea because it has lost its sheen. So this picture shows corneal xerosis. In later stages, this xerosis, corneal epithelium, it will get eroded and there may be formation of corneal ulcers, which eventually even can perforate the eye. Now, how can we say that yes, there is dry eyes, means there is any deformity in the ocular surface? So we have certain types of dyes by which we can tell yes, there is some problem. So first of all, fluorescein staining. These are the both the dyes, they are freely available. So first one is fluorescein. It is an orange color dye. It is available in the form of strip also, and some strips are available in the market. You just have to put it into the eye just like this and put it here, and it will impart its dye to the tear film, so we can assess if there is a problem or not. So what it does, it stains the corneal and conjunctival epithelium, means damaged one. When there is some damage, it does not stain normal cornea or normal conjunctiva. So when there is any damage to the superficial layer of cornea or conjunctiva, then this dye enters. Because as I already told, the corneal epithelium is hydrophobic. This dye is mildly dissolvable in water. So it dyes precorneal tear film, means cornea के आगे जो tear film है उसको it dyes into its color. Along with that, if there is any erosion into corneal epithelium or any problematic conjunctival epithelium, so that patches will be dyed. Rest part will not get colored. So this dye is orange colored dye, but when we see this through the slit lamp with the cobalt blue filter, it shows in a beautiful opaque green color. Next is rose Bengal dye. This is a pink color dye and it has an affinity for dead cells, dead and devitalized epithelial cells that have lost or altered mucus layer. It will stain those cells. So we will come to know by using rose Bengal that there are some areas which have devitalized epithelial cells.
This is the picture of rose Bengal staining. This is the pink color dye. In the picture towards left side, there is on the cornea, there is some pink color, which shows that this part of the cornea has devitalized epithelium. And in the right one picture, there are some dots, which indicates the mucus plaques or the cells which are not healthy, and this also stains mucus along with the unhealthy mucus along with the devitalized cells. So in the second pic, mucus plaques are stained with rose Bengal dye. The next test we can do is breakup time. So normally what happens when we blink our eye, the fresh tear film is spread on the eye, and normally it breaks automatically within 15 to 35 seconds. We want to see if the patient is having any problem in the tear film breakup time. So what we will do, we will instill the same fluorescein dye, which I was telling, that is an orange colored dye. We will instill that into the eye. That is available in the form of uh, eye drops also. So one drop of that dye, or maybe we can use the strip also. So one drop of that eye will be instilled into the eye, and patient will be asked to close his or her eyes. Then this test will be done on the slit lamp. So patient is closing, we use the dye and ask the patient to close the eye. When he or she opens the eye, we count the time. The timer is set up, and first appearance of black spot. In the second pic, you can see there are some black spots or black patches seen in the second pic. Means in the first pic, there is tear film is properly spread out, smooth, no breakup is there, no any spot of black is present in the first pic, but in the second pic there are numerous black spots. So what are these? These are the areas where tear film has been broken. So we count the time as the patient opens the eye and the appearance of first black spot. The difference between these two is counted and it is noted. Normally, it should be after 15 seconds, or patient may take even 35 seconds also. But if the first dark spot appears below 10 second time, then it is not normal, it is pathological. Now, if we want to see that the tear secretion is normally there, or there is any hyposecretion, then we have a test, Shermer's test. In this test, as it is shown in the picture, that these simple strips of filter paper, this is specialized Waterman 41 number filter paper. These are also freely available in the market. In this, these are calibrated filter paper strips, means there is marking at the 5 to 35 full. So at the 5 end, we just fold it, and we ask the patient to look upward and insert this into the eye at the junction of medial 2/3 and lateral 1/3. Why this is done? Because cornea is most sensitive and most valuable part in the outer part of the eye. So cornea should not have any opacity, should not have any kind of infection, because from cornea only to this transparent part, the visual, the rays, they pass on into the eye. So we always try to do all kind of tests or strips to put into the eye at the junction of medial 2/3 and lateral 1/3, so that cornea is not touched. In this test, we just place these strips in both the eyes, or if any case in one eye, if the patient has problem in one eye only, and we ask the patient to look up to the roof and do not blink the eyes. Then after 5 minutes of duration, we just remove this and see the wetting of this. The wet part is seen properly. Then we just see how much of the strip is wet. If it is more than 15
mm is wet part, then it is normal tear volume. If it is up up to 10, then we can say it is moderately dry eye. And if it is more less than even 5, then there is certainly pathological. So what is difference between aqueous deficient and hyperevaporative dry eye? In aqueous deficient means the major portion quantity is decreased. What we will find the Sharma test will find very low value, and the tear meniscus which I talked about earlier, that will definitely be reduced, and there will be lid parallel conjunctival folds. The conjunctiva is a smooth mucous membrane. It does not have any fold or any wrinkling. It is a very shining and transparent structure. But when there is cirrhosis, then it gets wrinkled and there are folds which are parallel to lid. They are known as lid parallel conjunctival folds. It is seen in aqueous deficient type of dry eye. In hyperevaporative dry eye, there will be pathological changes to lid margin, because lid margin has what it has. It has meibomian glands, and if there is any dysfunction in that, then there will be lesser or faulty production of lipids, which eventually will cause easy evaporation. So pathological changes in the lid margin will be found in hyperevaporative type of dry eye. And obstructed meibomian gland orifice, as I already told in one of the pics, that the orifices were blocked or obstructed. If they are obstructed, then the mucin, then the lipid layer will not be formed properly. And in this case, hyperevaporative type, the breakup time will be decreased, means it will break up easily in lesser time. Now comes to treatment. So patient education is very important. In this, we must tell to the patient that it is a chronic disease and it will take long-term treatment, and it will be having a slow effect in treatment. And because there must be having any meibomian gland dysfunction along with some inflammation, and along with may or may not be having any underlying systemic disorder. So along with these education, we must ask the patient to avoid all the aggravating factors, like being in dry, windy and sunny areas, being outdoors all the time. We should ask the patient to not be outdoors all the times unnecessarily, and we should ask the patient to not to be remain seated in AC chambers all the time, because what happens in air conditioning, it reduces the humidity of the air, and if the air is dry, automatically there will be dry eyes. And likewise, cigarette smoke, it also dries the eyes, and and it makes the evaporation more easily. Along with the dry eye, if there is any underlying disorder like Sjogren syndrome or any Steven Johnson syndrome, they must also be treated. So what modern medical science has, the main line of treatment for dry eyes, they have artificial tears. Means the foremost symptomatic treatment. What artificial tear does, they increase the tear film stability, reduce ocular stress, increase the quality of life for the patient until they are just instilling it, they will feel better. What is the major problem with the artificial teardrops? All the aqueous preparation or all the medications, they are having some shelf life. To make it, to prolong the shelf life, there must be some preservatives added. So generally in this eye preparations, one preservative, benzalkonium chloride, it is mainly used. It is now found that it plays an epitheliotoxin role, means the epithelium of the conjunctiva and cornea is disturbed by its continuous use. So if the patient of dry eye
instills the topical formulation of artificial tears daily on a regular basis, then he or she may have epithelial damage. So for that, we have to find other remedies also. This is the major drawback of the artificial tears. Also, along with the artificial tears, normally any eye drop, which is for this disorder or any other disorders, all of them have preservatives in them. That is why all the time artificial teardrops or any other teardrops must not be prescribed to patient for longer durations. Means sometimes patients come to us and they tell us that at the time of surgery I just purchased this, or this was written to me and I purchased it, and I again purchased it on my own without even consulting the doctor. So this is a malpractice. This should not be done, because eventually it will disrupt their original uh, tear film, and it may help in the any other disease for which they were instilling the eye drops, but it will lead to dry eyes, because the preservative will cause ocular surface disorder. So any being a doctor, we should know that we have to prescribe, we have to educate the patient that this drops of any problem, not specifically dry eyes, of any problem in the eye, that for this specific period of time you have to instill this drop, and then if it does not get solved, then come again, and do not instill it on your own for longer durations. Again, there is some subclinical inflammation. So for that, we have to treat dry eyes with anti-inflammatory treatment also. Another option is corticosteroids, because they are very potent anti-inflammatory. So with NSAIDs, if the problem is not being resolved, we can jump to corticosteroids. And it has shown that the corticosteroid eye drops, if instilled, they improve the symptoms and signs of even severe dry eye disease. But they also have their own obligations. The corticosteroids, if instilled for longer durations, they raise the intraocular pressure and they may cause glaucoma in the patients. And they are cataractogenic, means they can form early cataract in the eyes. There are several studies which show that uh, unnecessarily longer durations instillation of corticosteroid eye drops make the person prone to glaucoma and cataract. So they should be used judiciously. Now in the market, there is also available cyclosporin, which has its role in increased production of tear film. Also, if there is, as I told, there is faulty mucus and the mucus filaments and mucus dots, they get stuck on cornea. So they also have to be dissolved. For that, there are mucolytic eye drops, which is acetylcysteine. They are prescribed. Now, orally, there are tetracyclines, which are antibiotics along with the anti-inflammatory action. So, minocycline and doxycycline are given. They have a very good effect in MGD, meibomian gland dysfunction. Now, omega fatty acids, they are an proven anti-inflammatory action they have, and they are very good for ocular surface homeostasis. So they are to be taken from food, means the food rich in omega fatty acid, which is ghee, that should be taken properly, so that ocular surface is having proper smooth functioning and smooth epithelial, all the good epithelial structure. Now recently the eye drops are in the pipeline. They will be available for this dry eye of omega fatty acids. Punctal plugs. Earlier, I was talking about the medicines which will increase the tear production or which will help in resuming all the problems of meibomian glands or mucus.
Now, what separate thing we have? Punctal plugs, because in the lacrimal drainage system, from the gland, the tears are produced and they are spread over the eye, and from the punctum to canaliculus to sac and the nasolacrimal duct, they are just drained. This is a normal passage. So, if we block the punctum, and if the very few um, aqueous part is formed, even if we hamper their drainage, then we can have some amount of aqueous part in the eye. So for that purpose, we can plug the punctum to hamper the drainage. In this, what we have, small collagen or silicone plugs are available in the market, which are inserted into the punctum, initially in one, because we have punctum in both upper lid and lower lid. So, sorry. Initially, one punctum is blocked. If that suffices, then only one punctum suffices, then only one punctum is blocked. But it also has its own obligations. The most frequent complication is loss of the plug. In some studies it has been shown that the plugs gets lost even after, suppose after 1 month, we want to remove the plug because patients gets improved, or initially the plugging was done in both the puncta, and after 2 or 3 months we want to remove the plug in from one punctum, and the plug is lost. So this is a complication. And sometimes the plug migrates into nasolacrimal duct, and which eventually may form inflammation there or may cause pyogenic granuloma. So these are the other factors which are associated with punctal plugging. Now, eyelid hygiene. Because in the eyelid, there are tarsal glands, which in meibomian gland I'm talking since starting. So they are present in the eyelids. So if the eyelids are properly maintained hygienically, properly cleaned, there is no infection in the eyelids. Any inflammation in the eyelids is known as blepharitis. So in the posterior type of blepharitis, there is meibomian gland dysfunction. So we should ask the patient to properly clean his or her eyelids so that there are no chances of MGD. So, but another factor is there, meibomian glands, which they secrete lipids, and the melting point of lipids is between 28 to 32 degrees Celsius. But in patients of MGD, the melting point rises to 35 degree. So what happens? If the amount of lipid released depends on the temperature of the eyelid. So if we do warm compress, or we touch our eyes with our hands with our warm, because our fingers are warm, uh, the clean fingers, not the dirty hands, so that helps in expression of the lipids from the meibomian glands, means the secretion will increase if there is done warm compression. Consistent lid hygiene is basic treatment for meibomian gland dysfunction. Hot compresses, as I told, eyelid warming, masks or goggles, they have shown clinical improvement in eyelid margin morphology and with the reduction in blocked meibomian glands. Now come to Shushkakshi As per me, what I think, that any disorder in Ayurveda or in modern science, there it is not an obligation that we have to compare it, but we have very limited resources of Ayurveda, especially of Shalakya. We have very few literature of Shalakya Tantra, so we just try to correlate the things to have a better knowledge so that we can use the modern science investigation tools and techniques. So for that, our acharyas or some tikakars, they have tried to correlate Shushkakshipak with the dry eye syndrome. In Shushkakshipak, what Acharya Shushruth has told in Uttar Tantra Adhyay 6, Yat Kunitam Darun Rukshavartam Vilokane Chavil Darshanam, Yat Sudaranam Yat Pratibodhane, Shushkakshipako Patam Tadakshi. Yat Kunitam.
Kunit is the narrow eye, means sankuchit hui eye. As already I told in the clinical features that the palpebral fissure is diminished, or size of palpebral fissure reduced. So that is kunit eye. Darun ruksha vartma. So vartmans are lid, so they become darun, and ruksha means they become hard and dry. So the freely movement of lids over the globe becomes difficult. विलोकने चावल दर्शन कि देखने में आविल दर्शन मीन्स ब्लर्ड विजन है, धुंधला दिखाई दे रहा है. सुदारुणम यत प्रतिबोधने, प्रतिबोधन मीन्स कि जो आई की क्रिया है, उन्मीलन एंड निमेश, मतलब उन्मेष निमेश, उन्मीलन निमीलन की जो क्रिया है, आंख को उठाना और बंद करना, उसमें वो सुधारण हो गई है, वो पेनफुल हो गई है. So these are the symptoms as per Acharya Shushruta, which are more or less same of the drying eyes. Acharya Bhagvat in Ashtanga Hridaya, he has added some things. According to Acharya Shushruta, it is a Vatas disorder, and according to Acharya Bhagvat, it is Vat Pittaj. Vat Pittaturam Gharsh Tod Bhed Updehavat, Ruksh Darun Vartamakshi, Krachonmil Nimilanam, Vikunan Veshushkatva, Sheet Ichhashul Pakvat, Ukta Shushkakshi Pakwayam. इन्होंने कहा है वात पित्त आतुर में, आतुर मनुष्य में वात और पित्त के प्रकोप से क्या होगा, घर्ष होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, तोद, भेद, पीड़ा होंगी, उपदेहवत मीन्स थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा, जो कि म्यूकस वाला स्ट्रिंगी म्यूकस का डिस्चार्ज है, या फोमी डिस्चार्ज है, फ्रोथी डिस्चार्ज फाउंड. रुक्ष दारुण वर्तम अगेन, कृच्छ उन्मील निमील, वही जो ऊपर था, या प्रतिबोधन में जैसे दारुण था ऐसे ही कृच्छ उन्मील निमीलम. विकुणन विशुष्कत्व, कि आई में ड्राइनेस होगी, कुणित होगा. और शीत इच्छा, क्योंकि आचार्य वाग्भट ने पित्त का भी इसमें कुपित होना बताया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि मनुष्य को शीतल की इच्छा होती है. और साथ में शूल है और पाक भी है, तो इन्फ्लेमेशन है साथ में, इसको है उन्होंने शुष्क क्षिपाक कहा है. आचार्य सुश्रुत ने इसको सर्वगत व्याधि के अंडर माना है, और इसे औषध साध्य कहा है. इसमें कोई भी अष्टविध शस्त्र क्रम नहीं बताया है, और अशस्त्र कृत्य बताया है कि सिर्फ औषध से ही ये साध्य हो जाएगी. संप्राप्ति घटक जो मैं सोच पाई, मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि दोष तो आचार्य ने बताए ही हैं, कि सुश्रुत आचार्य ने वात की दुष्टि बताई है, और वाग्भट्टाचार्य जी ने वात और पित्त की. दुष्य कफ आश्रयी धातु रस, मांस, मेद और मज्जा. अग्नि मंदाग्नि, स्रोतस रस और रक्तवायु, अश्रुवाही भी हो सकते हैं. स्रोत दुष्टि संग है. रोग मार्ग मध्यम, अधिष्ठान सर्वगत रोग, साध्या साध्यता, ये व्याधि साध्य है. चिकित्सा, आचार्य ने बोला है कि इसमें स्नेहपान अत्यंत लाभदायक है, स्पेशली पुराण घृतपान. तर्पण जीवनीय गण से सिद्ध घृत के द्वारा बताया गया है. अक्षिप परिसेक, जिसे हम सेक भी कहते हैं, वो कोष्ण दुग्ध जिसमें थोड़ा सैंधव लवण मिला हो. आश्चोतन यष्टि मधु सिद्ध घृत से. विडालक, जो कि लेप करते हैं बिल्ली की आंख की तरह आंख के ऊपर, पक्षमुख को छोड़कर लोध्र और घृत को मिलाकर किया जाए तो अच्छा रहेगा. अंजन करना है शुंठी और दुग्ध और घृत को मिलाकर, या फिर केशांजन अलग से बताया है, जो कि बहुत ही कारगर बताया है. Now we come to end of this topic. So take home message, what we can suggest to all our patients, because these things are equally important as the treatment. So we have to instruct the patient to blink regularly, because from here only all the vicious cycle of hyperevaporation starts. So we have to instruct the patient that he or she has to forcefully blink the eyes, means he or she has to remember that we have to blink our eyes. When we speak, when we talk to any another person, we blink normally at a normal rate. But when we are in front of any screen, we just focus with our open, wide open eyes. We forget to blink our eyes. So we have to ask the patient to regularly blink, because that will break the vicious cycle. Again, when while using computer, there are so many people, we have our I work at BPS Mahila Vishwavidyalaya. We have medical college under this university. So
So many patients, they come to us, even from the staff of the medical college, because they have this problem of dry eyes, of using computer all the times, and not satisfactory treatment from the modern side. So what I especially instruct them to do, that some points, especially the staff which uses computer all the day, that brightness of screen should be at moderate level. Not, it should not be very less, and it should not be at the high intensity level. It should be moderate. And the screen level of the monitor should be below the level of our eyes. If the screen level is up from my eyes, then I will have to look up. So that means more of my bulbar conjunctiva and cornea will be exposed to atmosphere. I have to uh, keep the screen level a bit down, or at least at the level of eyes, so that I will look downwards, and more of the area of my palpebral fissure will be covered by the lids, and that will be remain wet. So it should be kept lower. And there is rule of 20-20-20, which says that after we do computer work for a period of 20 minutes, after that we must take a rest for at least 20 seconds. In that rest, we have to uh, see, or we have to look at far objects. Not like this, I'm now talking to you on this screen, and then I just switch my face to this side or that side. This is not a rest for my eyes. I have to look at far, from the window or from the door out, for at least 20 feet away. If this is not the case, if you are in a small room which is of smaller than 20 feet, then I ask the patients to stand and go out of the room, so that the eyes can have rest. So rule of 20-20-20, just following these 2-3 things, patients, they come and tell me that they get benefits so much from these small tidbits. Now, what we can ask the patients to have a good healthy diet. As per Ayurveda also, चक्षुषे अगर आहार विहार चक्षुषे आहार लें, or especially having vitamin A, because vitamin A will keep the cornea and conjunctiva epithelium healthy. And if that ocular surface is healthy, then there will be less chances of dry eye syndrome. Keep yourself hydrated. We are made of water, major portion of our body, and likewise eyes. If we completely we keep ourselves hydrated, then eventually eyes will be hydrated, and there will be less chances of dryness. Turn on a humidifier. Now we are having winters in this North India, so if we keep on these room heaters, turn on these room heaters, or uh, all the what we call room heaters. So what they do, they make the air dry, or blowers or room heaters. So what I suggest to my patients, that if you are not in a condition you have to turn on the blower or this heaters, put a pot with the water on the, if you are using normal heater on which we can even cook the food, so put some water into that pan and put it on the heater, so that the fumes, that vapors that will balance the humidity. And I ask the patients to switch off the blower or heater, not to turn it on for throughout the day, because that causes less humidity in the room, which eventually makes our eye dry. And last is warm compresses to the eye. When we ask the patients to warm compresses, I asked it in two ways. Just warm water, take warm water, means hot the water, fresh water, and take cotton, dip it into it, squeeze it, and put it on the eyes. But not for longer duration, just once or twice a day if you are suffering, not normal. So it will what it will do,
it will maintain the temperature of lids, and eventually meibomian gland secretion will be oozed out normally. So which is very important in hyperevaporative dry eye. In Ayurveda also, in Ashtang Sangra, it is told, after भोजनोत्तर पश्चात कर्म, उसमें बताया है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद वी जस्ट वॉश आवर हैंड्स, तो जो स्निग्ध हाथ हैं पानी से साफ करके उस पे कोई अन्न का कण ना हो जब, तो दैट वार्म हैंड्स, बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो स्निग्ध रहते हैं हाथ और वो साफ हैं, तो वी शुड press those fingers to the eyes like this, because this is warm and snigd, so that will maintain the proper temperature for expression of uh, meibomian glands lipids. So that is very important. Our acharyas at that stage knew that if we do this practice, then there is no chance that there will be any faulty lipid layer happening in our eye. So if we make it a normal ritual, that will help us in fighting with this dry eye. So thank you. Now I sum up. If anyone has any query, please ask. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा और मुझे लगता है कि मेरे यूजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और सच में बहुत ही अच्छा रहा उन लोगों के लिए। और कुछ चैट बॉक्स में भी उन्होंने वो छोड़े हुए हैं कि भाई सच में नाइस प्रेजेंटेशन है और इंफॉर्मेटिव है। तो मैं समझती हूँ कि हम सोच रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने पूर्ण योग्यता को लेते हुए, ग्रहण करते हुए समाज में जाए, तो ये हमारी मनोकामना या हमारा परिश्रम ज़रूर एक दिन कामयाब होगा। और मैं आधिकारिक तौर पे डॉक्टर अनुराधा का धन्यवाद करने के लिए और रिस्पेक्टेड डॉक्टर गीता मैडम को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर गीता मैडम। नमस्कार मैम। जी, नमस्कार। हाँ, मैम मैं तो पूरा लेक्चर सुन रही थी, तो इतना सहज भाव से मैम आप डॉक्टर अनुराधा का भी और डॉक्टर अनुभा का भी मैंने सुना। मैं तो इमली देख के, इमली सुन के मैंने तो कई चीजें सोची बैठे बैठे कि हम इसमें इमली डाला करेंगे, हम उसमें डाला करेंगे। और मैडम का तो लेक्चर बहुत कंसाइज था और बहुत बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव था। यानी बहुत से मुझे ऐसे लगता है कि ये लेक्चर सुन के जो हमारा भी रिवाइज हो जाता है, जो चीजें हम भूल जाते हैं बार बार। और जैसे मेरा बच्चा तो ऑनलाइन वर्क करता है, तो मैं उसको बहुत सी बातें आज बताने वाली हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो। तो यानी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे पास शब्द नहीं है आपको, यानी आपके जो पूरा मतलब जैसे होता है ना एक भाषा पे भी नियंत्रण और अच्छे सहज भाव से आप एक एक चीज समझा रही थी। मैच्योरिटी थी आपके लेक्चर में, बहुत मैच्योरिटी थी। और सुंदर अध्ययन भी किया आपने और अध्यापन भी करवाया, मुझे इतना ही पता है। तो मैं बहुत ज्यादा शब्दों में तो नहीं बता पाऊंगी। तो और तरक्की करो, यानी ऐसा आशीर्वाद देती हूँ मैं Thank आपको। और you. ज्यादा अध्ययन करो और समाज को अपना ज्ञान देते रहो। तो मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से, हेतल मैडम की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी पथ पे हम मैडम के साथ चलते रहें और समाज कल्याण की और आयुर्वेद को और तरक्की पे ले जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मैम एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, तो मैं उसको ले लेती हाँ जी, हूँ। हाँ जी बेटा, मैंने देखा नहीं, आप ले लीजिए। हाँ जी, ले लीजिए। तो इसमें हिना ने पूछा है कि हाउ कैन विडालक बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग ड्राई आई। सो सबसे पहले तो कोई हम जो आयुर्वेद का सोचते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, शलाक्य में स्पेशली, कि सब कुछ जो है वो टॉपिकल अगर लगाया तो हो गया। अगर ये सिर्फ लगाने से प्रॉपरली कोई चीज ठीक हो जाती,
तो ड्राई आई कोई डिसऑर्डर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल टीयर्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉप्स टू जेल्स, ठीक है, तो इवन टू प्लग्स, वो उसके अंदर ही आंख के अंदर प्लग डाल दो, सो दैट स्लोली स्लोली वो रिटार्डिंग फॉर्म में रिलीज होता रहे, स्लो रिलीज। ऐसा नहीं है बेटा, हमें इसके साथ में बहुत सारी चीजें और करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, शालाक्य में जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सिर्फ हमें ये नहीं सोचना है कि हमें आई का ही करना है। तो अगर हम ये सोचें सिर्फ विडालक से अगर ये ठीक हो जाएगी तो ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन विडालक कैसे रोल प्ले करेगा वो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि विडालक में जैसे अगर हम जो भी लोध्र का लेप और घृत के साथ लगाएंगे। हाँ, एक बात मैं भूल गई बताना, जो ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए अब मॉडर्न साइंस दे आर ट्राइंग टू मेक आई ड्रॉप्स। सो व्हाट आर ओमेगा फैटी एसिड्स? दे आर रिचली फाउंड इन घृत, जिस घी को हमने अपनी लाइफ से निकाल दिया है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस अगर बोलेगी कि हाँ यू शुड इनकलकेट घी, देन वी विल स्टार्ट। तो अपने आयुर्वेद में तो कहा है ना कि खाना शुष्क और रुक्ष तो खाना ही नहीं है, स्निग्ध होना चाहिए। तो ओमेगा फैटी एसिड गौघृत में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो अगर हम गौघृत को खा रहे हैं या उसको लगा रहे हैं, सो दैट इज इक्वली बेनिफिशियल। तो जब हम कोई भी लेप लगाएंगे और उसको हल्का सा पोषण करेंगे, तो बेटा वो ट्रीट करेगा हमारी मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन को। क्योंकि जो एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आई है उसमें ज्यादा रोल नहीं है हमारा किसी भी ट्रीटमेंट का। मेन हम जो काम करते हैं वो हाइपर इवेपोरेटिव में करते हैं, और जो जिससे मेनली सब सफर भी करते हैं ड्यू टू दिस कंप्यूटर यूजेज एंड ऑल। तो जो मेजर पोर्शन ऑफ पेशेंट्स हैं वो हाइपर इवेपोरेटिव ड्राई आई डिजीज के हैं। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं कि इनटेक ऑफ घी, इसीलिए पुराण घृतपान बताया है, ठीक है। और साथ में अगर हम उसको लगाएंगे, जैसे हमने परिषेक भी बताया तो दुग्ध का बताया, उसमें थोड़ा सैंधव लवण मिलाकर, वो कोष्ण बताया, तो वो वात को शमन करेगा। ऐसे ही अगर हम घृत के साथ मिला के लोद्र का या जो भी अन्य औषधियां कही गई हैं उनको थोड़ा सा कोष्ण करके उसका लेप करेंगे, तो वो क्या होगा, थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्ट करेगा। तो eventually that will help in expression of the secretion of meibomian glands. I hope I will be able to satisfy your query. जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? और नहीं है मैम कोई हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ जी, 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 जी। बहुत सारा धन्यवाद पुनः पुनः, और डॉक्टर थैंक यू गीता मैम। मैडम का भी बहुत सारा धन्यवाद। और इसके साथ-साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को जॉइन किया, इसके लिए भी उनका बहुत सारा धन्यवाद। और खासकर डॉक्टर विकास का आज आपने जॉइन किया है, और बहुत सारी बार जब मैं इमरजेंसी में होती हूँ तो डॉक्टर विकास बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसको कोऑर्डिनेट करने की। तो डॉक्टर विकास जी, आज हम विश्वारित परिषद की ओर से आपका और दीक्षा खतुरिया दोनों का ही बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप दोनों बिल्कुल इमरजेंसी के समय में एक आधार स्तंभ की तरह खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद। सीनियर पत्रकार मोनालिसा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा इस कार्यक्रम को जॉइन करती है और हमारा उत्साहवर्धन करती है, और समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आप हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। बहुत सारा धन्यवाद सभी को। और मैं अंत में शांति मंत्र का उच्चारण करती हूँ, और आप सभी म्यूट रखकर ही अपना शांति मंत्र को दोहराएँगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। सभी का हृदय से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you ma'am, thank you for this opportunity. Thank you. थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। Now I can sign off ma'am.